हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स पॉइंट। आज हम आपके साथ बीजी फिफ्थ सेमेस्टर के कुछ गेस्ट पेपर्स और सभी सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स शेयर करने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में हम और भी सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। और अगर आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसकी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप वो ज्वाइन कर सकते हो। अगर हम सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश की बात करें, इसमें जो पहला सेक्शन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के गेस्ट पेपर है जनरल इंग्लिश का। वो क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ पोएम द रिवर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट सम ऑफ द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द पोएम ऑन जेनिफर्स टाइगर। क्वेश्चन नंबर फोर, हाउ डिड एमिली डिकिंसन personalize death in the poem because could not stop from for death। सेक्शन बी मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें आपको दो ही क्वेश्चन करने हैं, पर क्वेश्चन 5 मार्क्स है। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द स्टोरी द क्वेश्चन ऑफ द हेड एज अ क्रिटिक ऑफ ब्यूरोक्रेसी। इस क्वेश्चन का जो और है, हाउ डज द पोएम juxtapose द जस्ट एंड प्रेजेंट इन आफ्टर 10 years। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन ब्रीफली द लाइन इज गिवन बिलो। सक्सेस इज counted sweetest by those who never succeed to comprehend an actor requires sacristi need। इस क्वेश्चन का जो और है, डिस्कस द पोएम ऑन जेडी फर्स्ट टाइगर एज ए क्रिटिक ऑफ पेट्रियार्ची। सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें आपको एक ही क्वेश्चन करना है दो में से, पर क्वेश्चन 8 मार्क्स है। क्वेश्चन नंबर 7, कमेंट ऑन द रियलाइजेशन दैट ओवरकम्स द हबक खातून व्हेन शी सीज द फिशरमैन रोस्टिंग फिश। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज द पोएट इवोक ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ नेचर नेचुरल फोर्स इन द पोएम ओ अर्थ वेट फॉर बी। ये था जनरल इंग्लिश पीजी सेमेस्टर का गेस्ट पेपर। अब हम आपके साथ बाकी सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स शेयर करने जा रहे हैं, उससे आप पता लगा सकते हो कि पेपर का पैटर्न कैसे होता है एग्ज़ाम में। पॉलिटिकल साइंस इंडियन थॉट फिगर्स एंड थीम्स जनवरी 2019 और 20 का जो पेपर प्रीवियस ईयर पेपर था, इसमें मैक्सिमम मार्क्स 90 है और मिनिमम 36। अगर हम टाइम की बात करें 2 आवर्स। और सेक्शन ए की बात करें, इसमें आपको 8 क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन 4 मार्क्स। इसमें आपको सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट आर Kotial's view on state। Question number second, what are Gandhi's view on Swaraj। Question number third, B.R. Ambedkar was deadly against untouchability comment। Question number four, what is Nehru's democratic socialism। Question number five, Ram Manohar Lohai was a critic of Western ideals comment। Question number six, what is social thought of E.D. Savarkar। Question number seven, what are Savarkar's views on nationalism। Question number 8, what are Maulana Abdul Kalam Azad's views about nationalism। सेक्शन में मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, पर क्वेश्चन 8 मार्क्स है। उस सब क्वेश्चन में आपको और मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस कोटियाल's व्यू ऑन वेलफेयर स्टेट। इस क्वेश्चन का जो और है, डिस्कस द ड्यूटीज एंड ओब्लिगेशंस ऑफ द किंग एज इन्वेस्टिगेटेड बाय कोटियाला। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द गांधीज व्यूज अबाउट द अहिंसा एंड सत्याग्रह। इस क्वेश्चन का जो और है, हाउ डिड तिलक इन्फ्यूज द नेशनलिज्म एमंग द मासेस। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू यू वांट अबाउट गांधी एम्बरकर डिबेट। इस क्वेश्चन का जो और है, हाउ डू यू नो अबाउट द जया प्रकाश नारायण ट्रेडिशन फ्रॉम मार्क्सिज्म टू सरोदिया। क्वेश्चन नंबर 12, एग्जामिन द स्टैंडिंग ऑफ नेहरू एज ए प्रोमैटिक थिंकर। इस क्वेश्चन का जो और है, एक्सप्लोर नेहरूज आइडियाज ऑन प्लानिंग। सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें आपको दो ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, पर क्वेश्चन 13 मार्क्स है, टोटल 26। क्वेश्चन नंबर 13, राइट ए डिटेल नोट ऑन द पॉलिटिकल थॉट ऑफ कोटियाला। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डू यू नो अबाउट द पॉलिटिकल थॉट ऑफ B.R. अम्बेडकर, हाउ व्हाट आर हिज व्यूज अबाउट कास्टिज्म। क्वेश्चन नंबर 15, डिस्कस Nehru as an internationalist, how was his approach towards international issues। Question number 60, is Gandhism relevant in our contemporary times, discuss। जनरल इंग्लिश फिफ्थ सेमेस्टर का जो प्रीवियस ईयर पेपर था दिसंबर 2019-20 का, इसमें मैक्सिमम मार्क्स 30 थे, मिनिमम 12। सेक्शन ए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें आपको 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स, और इस सेक्शन के टोटल मार्क्स 12 थे।
Question number first, how does the poet compare his mother with the twisted backbone tree in the poem of Mother, among other things? Question number 12, second, fill in the blanks with appropriate modal verbs. First, you dash dash always obey the traffic rules. Second, if she dash dash she me here, she will be annoyed. Question see what I dash dash have loved to visit the Taj Mahal when we were in Agra last year. Question number third, remove the adverb to from the following sentences. First, junk foods are too oily to the healthy. Second, he was too frightened to run. Third, he was too happy to care. Question number four, who is the narrator of the poem The Wolf Who Crossed? Postscript to Little Red Riding Hood. क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें आपको दो क्वेश्चन है करने हैं, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स, टोटल 10 मार्क्स है। इसमें आपको सभी क्वेश्चन में और मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज आगा शाहिद अली खान गिवाइज टू द अदर ऑफ द ओरिजिनल स्टोरी लिटिल रेड राइडिंग हुड। इस क्वेश्चन का जो और है, कमेंट ऑन द एंडिंग ऑफ द पोएम द वुल्फ पोस्टस्क्रिप्ट टू लिटिल रेड राइडिंग हुड। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द डेथ फादर्स लेगेसी इन द पोएम ऑब्चुअरी। इस क्वेश्चन का जो और है, हाउ डज द पोएम ब्लेंड द सीरियस with the humorous while mentioning the cremation to the father in the poem obituary। सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में जो आपको एक ही क्वेश्चन करना है, पर क्वेश्चन 8 मार्क्स है। क्वेश्चन नंबर 7, कमेंट ऑन द poet is longing for his homeland in postcard from Kashmir। क्वेश्चन नंबर 8, the poet uses the imaginary to show the aging process of his mother among other things discuss while illustrations। एजुकेशन का जो प्रीवियस ईयर पेपर था गाइडिंग एंड काउंसलिंग, इसमें मैक्सिमम 60 और मिनिमम 24 मार्क्स। सेक्शन ए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 8 मार्क्स या 8 क्वेश्चन है पर क्वेश्चन 3 मार्क्स। आपको 8 क्वेश्चन आप इसमें अटेम्प्ट करने। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाई डू वी नीड गाइडेंस। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु सेड गाइडेंस इज अ प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग द इंडिविजुअल थ्रू हिज ओन एफर्ट्स डिस्कवर एंड डेवलप हिज पोटेंशियल इन ऑर्डर टू बेटर एडजस्ट द एनवायरनमेंट। Question number third, list out the 4 foundations or basis of guidance। Question number 4, what is personality? Name any 2 project techniques of assessing personality। Question number 5, what is cumulative record card। Question number 6, name 2 testing and not 2 non-testing techniques for studying and appraisal of an individual। Question number 7, name 2 types of counseling with their chief exponents। Question number 8, define counseling। सेक्शन बी मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द हिस्ट्री ऑफ गाइडेंस मूवमेंट इन इंडिया। इस क्वेश्चन का जो और है, एन्यूमरेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गाइडेंस। क्वेश्चन नंबर 10, ब्रीफली एक्सप्लेन द सोशो कल्चर फाउंडेशन बेसिस ऑफ गाइडेंस। क्वेश्चन इस क्वेश्चन का जो और है, स्टेट द यूज ऑफ पर्सनैलिटी टेस्टिंग इन गाइडेंस। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज cumulative record card, enumerate the characteristics of cumulative record card। इस क्वेश्चन का जो और है, हाईलाइट द यूजेस ऑफ एजुकेशन एंड करप्शन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 12, हाईलाइट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन डायरेक्ट काउंसलिंग। इस क्वेश्चन का जो और है, enumerate the quantities of counselor। सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें आपको 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, पर क्वेश्चन 8 मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज गाइडेंस, डिस्कस द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ गाइडेंस। क्वेश्चन नंबर 14, डिस्कस द साइकोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फाउंडेशन बेस ऑफ गाइडेंस। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज मेंट बाय ऑक्यूपेशनल इन्फॉर्मेशन मेथड, इट इज पर्पस। क्वेश्चन नंबर 16, गिव द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डायरेक्ट एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, हाउ डज डायरेक्टिव काउंसलिंग डिफर फ्रॉम नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें आपको 90 मार्क्स मैक्सिमम है और मिनिमम 36। इसमें जो पहला सेक्शन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म यूनिटरी इलास्टिसिटी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज डिमांड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज प्राइस कंजप्शन करो। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन द टर्म इकोनॉमिक रेंट, व्हाट आर डिस्कोमनीज ऑफ स्केल, व्हाट आर आइसोक्वांटिज। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्टिंग्विश बिटवीन कोल्यूसिव एंड नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली, व्हाट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सेक्शन बी मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें आपको 4 क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन 8 मार्क्स। व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिस्कस वेरियस टाइप्स। क्वेश्चन का जो और है, डिस्कस वेरियस डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन ब्रीफली द डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इस क्वेश्चन जो और है, एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड विथ suitable diagram। क्वेश्चन नंबर 11, गिव अ डिटेल्ड नोट ऑन शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स। इस क्वेश्चन का जो और है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज monopoly, give it is essential features। क्वेश्चन which are a distinction between perfect competition and monopoly। सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें आपको 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, पर क्वेश्चन 13 मार्क्स है। क्वेश्चन नंबर 13, विद द हेल्प ऑफ ए hypothetical example draw a demand curve and show movements along the shifts in demand curve। what is consumption equilibrium determined using indifference curve approach। question number 15, explain the 3 stages of law of variable proportions with the help of suitable diagram। question number 16, what is perfect competition, how is
price determined in perfect consumption competition. क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया, इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स है 90, मिनिमम 36 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है। सेक्शन ए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एक्सप्लेन द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेवलपमेंट, व्हाट आर द demographic dividends. Question number 4, explain population growth. Question number 5, define distinction unemployment. Question number 6 is name the post reform employment scheme. Question number 7, define critical evolution of growth. Question number 8, what are official policies? Section B medium answer type questions, explain in detail with the features of Indian economy. इस क्वेश्चन का जो और है elaborate physical capital formation. क्वेश्चन नंबर 10, highlight the demographic features in India. इस क्वेश्चन का जो और है describe population growth. क्वेश्चन नंबर 11, differentiate occupational structure in organized and unorganized sector. इस क्वेश्चन का जो और है what are post reform employment schemes. क्वेश्चन नंबर 12, describe monetary policies. क्वेश्चन कुछ और है डिस्क्राइब official policies. क्वेश्चन में सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें जो 13 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कैपिटल फॉर्मेशन बोथ फिजिकल एंड ह्यूमन, इलॉबरेट डिस्टिंग्विश्ड एम्प्लॉयमेंट रूरल एंड अर्बन, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड्स, डिफरेंशिएट इन डिटेल monetary and official policies. हिस्ट्री ऑफ इंडिया सिंस 1947, इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स है 90 और मिनिमम 36। सेक्शन ए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रीएम्बल. क्वेश्चन नंबर 2, ब्रीफली एक्सप्लेन द टर्म डेमोग्राफी. क्वेश्चन नंबर 3, हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड व्हाई, राइट अबाउट द origin of socialist in India, when and how was the state of Jammu and Kashmir founded. Question number 6, give reasons for conversation of Muslim conference in India in national conference. Question number 7, give a brief description of article 370 and 35A. Question number 8, describe the chief features of Indian Accord, Kashmir Accord. Question number B, section B medium answer type question, give a brief description of constitution of India. इस क्वेश्चन का जो और है समराइज द नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑन एग्रीकल्चर टेनेंसी. क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. क्वेश्चन का जो और है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एबॉलिशन ऑफ लैंडलॉर्डिज्म एक्ट इन इंडिया. क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कस द फॉर्मेशन एंड रोल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर. इस क्वेश्चन का जो और है गिव द लाइफ स्केच ऑफ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला. क्वेश्चन 12, व्हाट फैक्टर्स अकाउंटेड फॉर कश्मीर टू बिकम एन इशू इन द सिक्योरिटी काउंसिल. इस क्वेश्चन का जो और है गिव ए कॉन्सेंस एपर्सल ऑफ दिल्ली एग्रीमेंट. सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें आपको 2 ही अटेम्प्ट करने हैं. पर क्वेश्चन 13 मार्क्स है. क्वेश्चन नंबर 13, debate on the legacies of British colonialism in India. How does the linguistic reorganization of India's states contribute to the Indian consolidation and integration? Question number 15, describe the main reason responsible for the dismissal of Sheikh Mohammed Abdullah for his position as the Prime Minister in 1953. Question number 16, account for the special autonomy of Jammu and Kashmir under Article 370. What are its main provisions? नेक्स्ट जो पेपर है लर्निंग स्किल्स ऑफ ड्रामा इन उर्दू, इसका आप प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हो. ड्रामा की तारीफ़ कीजिए, ड्रामा के अज्जाए तरकीबी में प्लॉट और किरदार की अहमियत बयान कीजिए. ये इसका प्रीवियस ईयर पेपर आप पास करके देख सकते हो. नेक्स्ट जो प्रीवियस ईयर पेपर है पॉलिटिकल साइंस वेस्टर्न थॉट, इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स है 90 और मिनिमम 36. क्वेश्चन सेक्शन है डिफाइन पॉलिटिकल थॉट, व्हाट इज सिटी स्टेट, व्हाट इज लीजर अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, व्हाट इज द पिक्चर ऑफ स्टेट ऑफ नेचर अकॉर्डिंग टू द जॉन लोकी, व्हाट इज द नेशनल इनइक्वालिटीज अकॉर्डिंग टू रूसो, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अदर रिगार्डिंग एक्शंस, व्हाट इज मेंट बाय Borgolese. Section in medium answer type question, discuss more major themes of Indian ancient Western political thought. Question जो आ रहा है discuss 4 major questions of modern Western political thought. Question 10, discuss the basic with mean a person for citizenship according to Aristotle. इस क्वेश्चन जो आ रहा है discuss John Locke's justification of the right to property. Question 11, discuss Rousseau's analysis of inequalities. इस क्वेश्चन में जो आ रहा है डिस्कस मिल्स रिफ्लेक्शंस ऑन डेमोक्रेसी. क्वेश्चन 12, डिस्कस व्यूज ऑफ हॉबीज ऑन सोवर्चेनिटी. इस क्वेश्चन को जो आ रहा है डिस्कस कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू. सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. एक्सप्लेन द मेजर थीम ऑफ एंशिएंट वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, क्रिटिकली डिस्कस एरिस्टोटल कांसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप,
Critically examine J.S. Miller's concept of liberty. Question number 16. The state is the origin of class rule. It could not calculate classes. Marx discuss. Political science, government and politics in J&K. Section A. Naya Kashmir Manifesto. Secularism. Article 370. Constitution, government, residency powers, constitution, preamble, autonomy, ये terms define करने हैं. Section B medium answer type question. Question 9. Discuss the geopolitical significance of Jammu and Kashmir state. Highlight इस question का जो और है, highlight the importance of 1931 uprising. Question 10. Explain secular progressive discourse as an orientation of the freedom movement. इस question को जो और है, explain the significance of Naya Kashmir Manifesto 1944. Question number 11. Examine the main features of Big Landed Estate Abolition Act 1950. इस question का जो और है, examine the main provisions of Delhi Agreement 1952. Explain the main features of Constitution of Jammu and Kashmir. इस question का जो और है, examine the working of State Constitution Assembly. Section से long type questions में दो आपको attempt करने हैं, पर question 13 marks है. Briefly discuss the factors that led the political awakening in Kashmir. Discuss the special status of Jammu and Kashmir enhanced in Article 370 of the Indian Constitution. Question 15. Examine the emergency ideology of all Jammu and Kashmir Muslim Conference. Question 16. Discuss the powers and position of Chief Minister. उर्दू लिटरेचर का आप प्रेशर पेपर देख सकते हो. गसल की सनफी शनाख्त तयीन कीजिए. आप वीडियो पॉज करके प्रेशर पेपर देख सकते हो. मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चन भी. नेक्स्ट जो पेपर है सोशोलॉजी का, बेसिक्स ऑफ सोशोलॉजी को. सेक्शन ए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. व्हाट डू यू मीन बाय सोशल डायनामिक्स? टू राइट डाउन टू सिमिलरिटीज बिटवीन सोशोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी. Question number 3. Define community. Question number 4. What do you understand by institution? Question number 5. What do you mean by reference group? Question number 6. Define Moors. Question number 7. What do you understand by material culture? Question number 8. Define enculturation. Section B medium answer type question है. इसमें आपको 4 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, पर क्वेश्चन 8 मार्क्स हैं. पर क्वेश्चन में आपको और मिलेगा. राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्कोप ऑफ सोशोलॉजी. इस क्वेश्चन का जो और है, डिस्कस इन द ब्रीफ द रिलेशनशिप बिटवीन सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी. Question 10. Explain and brief the main features of sociology. Question which are write a short note on concept of association. Question 11. Explain and brief the characteristics of primary group. This question which are write short note on roles, status. Question 12. Write down the difference between material and non-material culture. This question which are write a short note on concept of assimilation. Section C long stripe question. Question 13. What do you mean by term sociology? Explain and brief the subject matter of sociology. Question 14. Write a detailed essay on characteristics of community. Question 15. What do you understand by reference group? Explain in detail the importance of reference with suitable examples. Question 16. Discuss in detail the components of culture. नेक्स्ट जो पेपर है उर्दू लिटरेचर जेनरिक इलेक्टिव, आप इसका पेपर देख सकते हो. गज़ल की सनफी शनाख्त मुतय्यन कीजिए. वीडियो पास करके आप सभी क्वेश्चन देख सकते हो, और मीडियम टाइप क्वेश्चन भी आप वीडियो पास करके देख लो. नेक्स्ट जो पेपर है हिस्ट्री. थीम इन हिस्ट्री. फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. डिफाइन द टर्म पैलियोथिलिक. मेंशन टू फीचर्स ऑफ हरपना सिविलाइजेशन. कॉज ऑफ डाउनफॉल ऑफ बुद्धिज्म. राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ Mauryas. Define Balbon's theory of kinship. What are the impacts of Turkish concept on India? Mention early difficulties of Humayun to ascend throne. Question number 8. Define Mansabdari system. Question number section B. Describe the features of town planning of Harpana civilization. What are the causes responsible for decline of Harpana civilization? Write a short note on techniques of Buddhism. This question or elaborate the causes of rise of Jainism. Describe the cause of deadline of Delhi Sultanate. This question is or discuss the economic reforms of Abdullah Khilji. Question number 12. Discuss the religious policy of Akbar. This question or explain the Deccan policy of Aurangzeb. Section C. What are the main features of Neolithic age of India? Elaborate the Ashoka's concept of Dhamma. Explain the significance of Turkish conquest of India. Discuss the cause of decline of Mughal Empire. मैथमेटिक्स का आप प्रीवियस पेपर देख सकते हैं. प्लेन एंड सॉलिड ज्योमेट्री. सेक्शन ए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स हैं. सेक्शन बी मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चन भी आप देख सकते हो वीडियो पॉज करके.
इस्लामिक स्टडीज़ आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो प्रीवियस ईयर पेपर, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट पेपर है इकोनॉमिक्स, जनरल इकोनॉमिक्स सेक्शन है। डिफाइन माइक्रो इकोनॉमिक्स, डिफाइन सोशलिज्म, डिफाइन यूटिलिटी, एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड, डिफाइन मार्केट, डिफाइन मोनोपोली, डिफाइन नेचर इनकम, डिफाइन इन्फ्लेशन। सेक्शन बी डिफाइन इकोनॉमिक्स, एक्सप्लेन स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन का जो और है, डिफाइन इकोनॉमिक सिस्टम, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। क्वेश्चन 10 एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इस क्वेश्चन जो और है, डिफाइन इंडिफरेंस करो, एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस करो, एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ प्रोटेक्टिव कंपटीशन। इस क्वेश्चन जो और है, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड कैरेक्टर्स ऑफ मोनोपोली। क्वेश्चन 12 एक्सप्लेन कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ इन्फ्लेशन। इस क्वेश्चन का जो और है, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। सेक्शन सी डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक्सप्लेन इन डिटेल लॉ ऑफ सप्लाई, define monopolistic competition and state its properties, explain meaning and types of unemployment. Education issues and trends in contemporary Indian education, इसका प्रीवियस पेपर्स आप वीडियो पॉज करके देख सकती हो। मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो प्रीवियस पेपर है, zoology, applied zoology। क्वेश्चन सेक्शन फर्स्ट, डिफाइन communalism, गिव सम preventive measures of tuberculosis, write a short note on Helocorpa argimira. Question number 4, what do you mean by pests? Question number 5, give 3 principles of poultry breeding. What is Rinkeret disease? What do you mean by lag culture? Question number 8, what is induced breeding? Section B medium answer type question is briefly describe the pathogenicity of Entomoeba histidioca. इस क्वेश्चन में जो आ रहा है, give a detailed prevention control of typhoid disease. Question number 10, enumerate the control and damage caused by Perusula. Write a short on the medical importance and control of Pedicellus humanus corporis. Question number 11, write a account of virus of cattle. इस क्वेश्चन का जो आ रहा है, write a note on disease of poultry. What is aquaculture? Mention some genetic improvements in aquaculture industry. इस क्वेश्चन जो आ रहा है, give an account of peril and peril forming molluscs. Section C, question 13, give an account of life history and pathogenicity of Wolcheria benforfiti. Question 14, write a detailed note on biology and control damage caused by Phyllis Alzia. Question 15, give a detailed account of process and prevention of eggs. Give a detailed account of prawn fishery. Mention the types of prawn fisheries. सॉफ्ट स्किल का जो पेपर है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। व्हाट इज इफेक्टिव लिसनिंग इन कम्युनलिज्म। मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चन वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। जॉलजी का जो क्वेश्चन है, स्ट्रक्चरल जॉलजी। व्हाट इज टोपोग्राफिक मैप्स? व्हाट हाउ vesicular structure is developed in volcanic rocks? What is a joint? What does body develop in rock? What is thrust fault? What is difference between hot and heavy? What do most of island arcs of the earth occur? What is MPT in the Himalayas stands for? मीडियम टाइप क्वेश्चन आप वीडियो पास करके देख सकते हो, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी आप वीडियो पास करके देख सकते हो। Botany, cell and microbiology section is short answer type questions. What is codon and anticodon? What is meant by semi-conservative mode of DNA replication? What is Wobble hypothesis? Define gene. Who introduced the concept of gene? What is euchromatic and heterochromatin? Define terms antipode, sympode, unipode. What is nucleic acids? What is their function? What is phagocytosis? Medium answer type question is differentiate between prokaryote and eukaryote. Give a brief account of function and plasma membrane. Question 10, what is difference between meiosis first and meiosis second? इस क्वेश्चन का जो और हाउ इज DNA different from RNA? What are eukaryotic ribosomes different from prokaryotic ribosomes? Question number, इस क्वेश्चन जो और है, give a brief account of structure of any cell organelle which do you know is semi-autonomous in nature. Question 12, what is genetic code? What are its characteristics? इस क्वेश्चन का जो आ रहा है, with the help of diagram give a brief account of structure of tRNA molecule. Section C, long answer type question, give a detailed account of nucleus. Nuclear pore complex. Question 14, discuss in detail various models, explain structure of plasma membrane. How does graphitis and Avery show experimentally?
that DNA is a genetic material. Using examples of lac operon explain mechanism of gene regulation in prokaryotes. इकोनॉमिक मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का प्रीवियस ईयर पेपर्स आप वीडियो पास करके देख सकते हो। सेक्शन ए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सेक्शन बी का आप वीडियो पास करके देख सकते हो। कश्मीरी लिटरेचर का भी आप वीडियो पास करके देख सकते हो प्रीवियस ईयर पेपर। मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चन भी आप देख सकते हो वीडियो पास करके। इंग्लिश राइटिंग स्किल का भी आप प्रीवियस ईयर पेपर वीडियो पास करके देख सकते हो। व्हाट इज एजेंडा, व्हाट इज मीन बाय ब्रेनस्टॉर्मिंग इन ए राइटिंग प्रोसेस। सेक्शन बी मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चन भी आप देख सकते हो। इकोनॉमिक्स का भी आप प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हो सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी का भी। जियोग्राफी का प्रीवियस ईयर पेपर भी आप देख सकते हो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सेक्शन ए वीडियो पास करके, सेक्शन बी भी मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चन 20 मार्क्स है इसकी, और सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री का भी आप वीडियो पास करके देख सकते हो प्रीवियस ईयर पेपर। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चन। ये थे पीजी फिफ्थ सेमेस्टर के गेस्ट पेपर्स और कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स। आने वाले दिन में हम और भी सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे, और कुछ जॉब अपडेट्स भी इसी यूट्यूब चैनल पे आएंगे। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप वो ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू। और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।